हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से अनअकैडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। वेरी गुड इवनिंग, वेलकम एंड गुड आफ्टरनून एज वेल टू द अनअकैडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप सबके सब? आई होप एवरीबडी इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड, ग्रेट एंड फाइन। वेल, आज का सेशन है हमारा बोनांजा सीरीज को लेके जो हमारी चल रही है इस प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे अभी तक मैंने आपके संग बहुत सारे टॉपिक्स जो है कवर किए हैं। बोनांजा सीरीज पार्ट 2 है आज का। ये है पार्ट 2 लेके पीपल डेवलपमेंट को लेके। यहाँ पे प्रीवियसली मैंने आपके संग कवर किए हैं रिसर्च, टीचिंग, ठीक है। अब मैं जल्दी से जो है आपको, अगर आप ज्वाइन कर चुके हैं तो एक बार मुझे हाई लिख के भेज दीजिए। लेट्स सी, अगर जो जुड़ चुके हैं एक बार हाई लिख के भेजिए। देखिए कौन कौन जुड़ गए। ओके, चलिए हाई लिख के भेजिए जब तक चैट शुरू होती है। तो आपको जल्दी से जो है एक अच्छी सी बात बता देती हूँ, वो ये है कि अनअकैडमी पे होने वाला है इस संडे को। ओके, जुड़ गया है, चल रहा है, ठीक है। संडे को होने वाला है आपके लिए एक फोर्टनाइट कंपटीशन। फॉर द फर्स्ट टाइम ये होने वाला है अनअकैडमी कॉम्बैट, जहाँ पे मैनेजमेंट को लेके, कॉमर्स को लेके हम लोग करने वाले हैं एक लाइव ऑल ओवर इंडिया कंपटीशन आप लोगों के बीच में, जहाँ पे आप लोग ओरिजिनल एनटीए क्वेश्चंस पे जो है compete करेंगे। 40 क्वेश्चन, 60 मिनट का ये सेशन रहेगा, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, सुबह 11 बजे, जनवरी 17 यानी कि आने वाले संडे को लेके। ऑब्वियसली इसमें टॉप रैंकर्स के लिए हैं एक्साइटिंग प्राइसेस, लेकिन ओरिजिनल क्वेश्चंस डेवलप किए गए हैं हमारे बेस्ट एजुकेटर्स द्वारा, और यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों हैं। अब इसका यूनिक पॉइंट ये है कि आप ये सोचिए कि आप compete करने वाले हैं उन सारे स्टूडेंट्स, कैंडिडेट्स के साथ में जो ऑलरेडी अगर अप्लाई कर रहे हैं अपकमिंग एग्जाम के लिए, तो यहाँ क्यों नहीं होंगे, तो यहाँ भी वो सारे होंगे। तो जल्द से जल्द इसके लिए एनरोल कीजिए, जल्द से जल्द रजिस्टर कीजिए। रजिस्टर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी गिवन है। रजिस्टर करने के लिए अगर वो अनलॉक कोड मांग रहा है तो NTA NET डालना मत भूलिएगा, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो जल्द से जल्द कीजिए, बहुत ही मजा आने वाला है इस कॉम्बैट में। आगे बढ़ते हैं और आपको बताती हूँ कि लेटेस्ट पैटर्न्स के ऊपर फ्री क्लासेस चल रही हैं पेपर 1 को लेके। लेटेस्ट पैटर्न जो 2020 में इस बार देखने को मिला था UGC NTA NET के थ्रू, उस एग्जाम पेपर्स में जो मैंने आपको करंट एनालिसिस सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए हैं, सारे क्वेश्चन पेपर्स, मल्टीपल शिफ्ट्स के आपको क्वेश्चन पेपर्स मैंने सॉल्व करवाए हैं। वो सारे क्वेश्चन हर एक शिफ्ट के जो मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं, उनके पैटर्न्स को ऑब्जर्व करते हुए ये सीरीज मैं आपके लिए लेके आई हूँ, जहाँ पे ऑल 10 यूनिट्स के आपको डे टू डे बेसिस पे यूनिट वाइज जो है लेटेस्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रही हूँ, MCQ की। इस पर्टिकुलर सीरीज को आप एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस में एक्सेस कर सकते हैं। अगर अनलॉक कोड मांगेगा तो अनलॉक कोड आप डाल दीजिएगा ASHI10, जिससे आप एक्सेस कर सकेंगे फ्री क्लासेस। और एक बात आपको और बताऊं कि अनअकैडमी प्लस पे शुरू हो चुके हैं डिटेल्ड कोर्सेज, बैच कोर्सेज। आपकी प्रिपरेशन आने वाले जून 2021 के लिए करने के लिए बहुत ही पक्की, और इसे लेके आ रही हूँ मैं पेपर 1 के लिए, बुशरा और आदिति कॉमर्स के लिए, साक्षी लेके आ रही है सोशियोलॉजी के लिए। पेपर 1 तो मैं दे रही हूँ आपको ऑल 10 यूनिट्स का। यहाँ पे करना बस आपने इतना ही है कि आपने अगेन इस कोड को यूज कर लेना है, आपको मिल जाएगा 10% डिस्काउंट। 10% से ज्यादा ही मिलेगा, कैसे अभी बताती हूँ। लेकिन इन कोर्सेज को, सारे इन कोर्सेज को एक्सेस करने के लिए आपको करना है सब्सक्राइब जल्द से जल्द कीजिए। 1 मंथ, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स या फिर 2 ईयर्स के लिए। और मैं सजेस्ट करूंगी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 1 साल का, कम से कम 1 साल का, आई शुड से नहीं, एक्चुअली पता है क्या है, प्रिपरेशन में टाइम लगता है। जो स्पेशली बंदे पहली बार आ रहे हैं ना एग्जाम देने के लिए, इस दुनिया में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, उनको इन्स एंड आउट नहीं पता होते हैं। एग्जाम में क्या चाहिए, कैसे पैटर्न्स आते हैं, क्वेश्चन में क्या ट्रिक्स रहती हैं, क्या कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं। आप एक सिलेबस डाउनलोड कर लो, फ्री प्लेटफॉर्म पे क्लासेस अटेंड कर लो, जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी क्लासेस अटेंड कर लो। I don't think so that's a guaranteed success route, ठीक है। सो सब्सक्रिप्शन लीजिए, 1 साल आराम से लगाइए। बेयर मिनिमम 6 मंथ्स में तो आपको इस पर्टिकुलर कंपटीशन की पूरी इंफॉर्मेशन हो पाती है। फिर आप 6 महीने जम के तैयारी करते हैं, तो कम से कम जो है 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना आपका बनता है। खैर वो तो आप खुद भी डिसाइड कर सकते हैं, आप खुद अडल्ट हैं। लेकिन सब्सक्राइब करेंगे तो डिस्काउंट कोड जो है वो है ASHI10, जिसमें आपको 10% से ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा ऑन सब्सक्रिप्शन। कैसे? आपको 10% मेरे कोड से डिस्काउंट मिल जाएगा, प्लस आपके कुछ क्रेडिट कॉइन्स होंगे जो आपने फ्री क्लासेस देखी है उनकी वजह से भी आपको मिल जाएगा डिस्काउंट। तो सब्सक्राइब कीजिए जल्द से जल्द, और इन सारे कोर्सेज को जल्द से जल्द एंजॉय कीजिए, एक्सेस कीजिए UGC NET कैटेगरी में, ठीक है। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट को लेके। मैंने आपको 2-3 काम बता दिए हैं, वो जरूर कीजिएगा। क्या? कॉम्बैट
हर हालत में। अच्छा लाइव होनी है, बाद में नहीं एक्सेस कर सकते, तो इसलिए जल्द से जल्द एनरोल कर लो, लाइव का आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। दूसरा, सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी पे। तीसरा, स्पेशल क्लासेस पेपर 1 की मिस मत कीजिए। चलिए आइए हम शुरू करते हैं अपने आज के सेट ऑफ क्वेश्चंस। अरे वाह, बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं, देखते कौन कौन आया हुआ है। आयशा इज देयर, आकांक्षा इज देयर, प्रतिभा है और श्रुति हैं और आकांक्षा जोशी हैं और चिन्नप्पा राज हैं। वेरी वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सबके सब? हाउ इज एवरीवन डूइंग? ओके, चलिए मूविंग ऑन, लेट्स स्टार्ट ऑफ द सेशन फॉर टुडे एंड टॉक अबाउट पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, good evening beta ji. Now in this particular session, the questions which are there in front of you, let's discuss them one by one. The first question for today, 14th number है क्योंकि ये बोनांजा सीरीज है, इसलिए कल 13 questions हमने डिस्कस किए थे। 14th question of the series and first question for the day. Environment has been modified by human activities, and that environment which is modified is said to be called what? Natural environment. हाँ जी बेटा, इज इट कॉल्ड टू बी एंथ्रोपोजेनिक एनवायरनमेंट, मोडेम एनवायरनमेंट या अर्बन एनवायरनमेंट? वेल ऑब्वियसली अगर अर्बन एनवायरनमेंट है तो रूरल भी तो होगी ना मॉडिफाई। रूरल एरिया में क्या लकड़ी के ऊपर, लकड़ी के चूल्हों पे खाना नहीं बनता है, सो यू यूज वुड टू कुक फूड्स इन रूरल एरिया, सो व्हाई वुड नॉट दैट बी मॉडिफाइड? सो हेंस अर्बन द ऑप्शन गोज आउट द विंडो. व्हाट इज मॉडेम? ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर मॉडेम, नीदर द वर्ड इज मॉडर्न, बिकॉज देन मॉडर्न एंड प्रीवियस जो क्लासिकल टाइम पीरियड्स थे उसमें भी ह्यूमंस की वजह से एनवायरनमेंट जो है मॉडिफाई होता था टुवर्ड्स द बैड साइड. नेचुरल एनवायरनमेंट इज नॉट द करेक्ट वर्ड, बिकॉज देन वी आर सीइंग मॉडिफिकेशन नॉट जस्ट बाय वन जनरेशन. इट इज नॉट मी, you who are modifying the environment. It is basically our previous generations, our upcoming generations who are going to modify and who have been modifying the environment. Previously people used to go to offices and colleges on cycles. Today people use cars. Tomorrow people perhaps may be using airplanes. In such a situation, the generation by generation environment is modified towards the negative sense, and hence the correct answer for this is anthropogenic environment is being modified. So I hope you get the question. Okay, correct everybody? Yes or no? Hey Krishna, hello, hello. Okay, hey Shruti. Okay, answers have started coming in. B. Very nice, right? Yes, very good. Moving on, let's move to the next question. It says, which of the following is not true? Okay, just reverse the question here because don't get into the trick of it. It's said to be false. ठीक है, पहले question की trick को eliminate करते हुए जाओ. First option, inorganic nutrients are recycled in an ecosystem. Energy flow throughout the ecosystem in the form of CC bonds, carbon-carbon bonds. Energy is recycled in an ecosystem. Respiration process releases energy. Okay, wow. We have to find out false statement. Can I say inorganic nutrients are recycled in ecosystem is said to be true? Because then in that situation, organic and inorganic nutrients, if are recycled, the ecosystem has the only potential to do so, in case if we don't have artificial machines made to recycle inorganic nutrients. So I find the statement to be absolutely true. And if I say that I'm talking about the statement second, which is energy flow through the ecosystem in CC bond, I say yes, because then we have a carbon cycle. Also I would say that there is an oxygen nitrogen cycle, water cycle. So in ecosystem, in hydrosphere, combining hydro, litho and biosphere, ecosystem is basically dependent a lot on carbon component, carbon compound as well, right? Everything is made up of carbon. We have carbon, although we don't have bad carbon. Even our body perhaps has a carbon element in us. Okay, we have plants who have a carbon element attached to them. So henceforth, carbon is very much important. It's not a bad thing. And yes, ecosystem energy is flowing through CC bonds. So I find the statement to be absolutely correct. We are looking for a false statement. Respiration process releases energy. I mean, like, definitely respiration, even if I inhale, if I exhale, it is giving oxygen to my body to break down the food which I've eaten, and hence it is going to give me energy. The oxygen which goes in the body, in the blood, will help the blood go ahead and carry out. There would be no blood blockage because there is less oxygen. If there is more oxygen, it will be a good situation because then it's going to be leading a movement in the blood, and if there is a blood movement,
Obviously there is energy. So hence absolutely true. Third, which is already disturbing me to be false, and it is actually false, and the correct answer for this question. Why? Because energy is recycled in an ecosystem. Why energy would be recycling itself? Energy flows in the ecosystem, not recycles. Energy flows in the ecosystem with the help of food chain. With the help of food chain. We eat autotrophs, which are plants. Autotrophs get eaten by herbivores. Herbivores get eaten by carnivores, and so on. So henceforth, because of food chain, energy flows in the ecosystem, not gets recycled. So C option is said to be false, and the correct answer for this question. Okay. Moving on, let's go to question 16 and let me see आप लोगों ने कैसे perform किया है. Let the options come. D, नहीं बेटा. No, D is not the correct one. Akansha, I hope you get the point. रेस्पिरेशन प्रोसेस से एनर्जी होती है बेटा क्रिएट बॉडी में. डन. ओकी डोकी, सिर्फ एक बच्चे का करेक्ट जवाब आया, बाकी सबका गलत जवाब. आर वी डन? चलो ठीक है. Okay, perfect. Moving on, we're going to be talking about next question on the screen, which says driving force in ecosystem is what? Plants, producers, solar energy, or biomass? Well, in an ecosystem it's said, so plants which are autotrophs, although they are the basic trophic level, the first level in a food chain, they are consumed, and gradually the energy which is found at this level is said to be in abundance. It's more than 10,000, 100,000 kilocal. But then plants are not the driving force, because then plants are called as autotrophs, so automatically they are making the energy from sun, and that's why solar energy becomes the driving force. The word was force, not the source of ecosystem, and hence the correct answer is option number C. The sun becomes the energy coming from sun, the light, the sunlight becomes the source based on which plants generate energy within themselves, and by the concept of photosynthesis, and once done they are consumed by herbivores and so on. So ecosystem is surviving based on the basic element of life, which starts as sun. Right? I hope you get the point. Moving on, next question. Let's see how you performed. Clear? Chalo, great. Yes, solar energy it is. Perfect. Very nice. Beautiful. Okay. Done? Great. Okay. Next question on the screen. Physical chemical component of an ecosystem constitute what? Biotic structure, abiotic structure, both of these, here none. Well, if you have attended my previous classes on people development, which happened yesterday in this Bonanza series, it does constitute both of the structure, and both of the components are part and parcel of this ecosystem, biotic and abiotic component. Because then if anything is said to be using oxygen, liberating oxygen into the environment, it is said to be basing its activities on biotic factors. And in case if something is not using oxygen, in that situation we call it as abiotic component, abiotic factor, and hence both of the words, both of the activities, both of the conditions, both of the factors are correctly defining ecosystem. So I just in previous question also said that ecosystem comprises biotic and abiotic structure, right? Are we good to go? So correct answer becomes both of these, right? Are we good to go? Yeah, very nice. 17C. Okie dokie. Next question on the screen. Which of the following is an abiotic component of the following? Okay, bacteria is biotic, clearly, because then if it's actually blooming, if it's actually thriving, multiplying, it's based on biotic activities, biological activities. Perhaps some of the bacteria is also consuming oxygen, right? So hence it is biotic, not abiotic. Plants, definitely biotic, because then they have cells in them, plant cells. Plant cells use carbon dioxide but liberate oxygen. So oxygen is involved, biotic activity, biological activity is involved, and hence biotic in nature. Fungi, definitely not abiotic. It is biotic only because of the fact that fungi can bloom in case if there is abundance of moisture, and moisture is what?
presence of water vapors in the atmosphere. And what is a vapor? H2O, 2 hydrogen molecules and 1 oxygen molecule. And if oxygen is there, biotic component. So henceforth fungi is also a biotic component of the ecosystem. But what exactly is not biotic and is said to be abiotic is humus. Now ma'am, what exactly is humus? We are hearing this word for the first time. Well, humus is one such aspect which exactly does not thrive or bloom, we say, but humus is one such. I don't know if I can show you a photo of humus, what it looks like. Tomorrow I'll definitely bring a photo to you. If we have a class tomorrow, I'll bring up the photo for you. Basically, when the plants and leaves decay themselves or they're dead, so what happens, they just fall to the ground, and if they're not cleared, the debris of the plant, dead plant is not cleared, it just lies there for the longest time period you can think of. Even if there is no decomposer or bacteria or fungi actually blooming upon it, it just lies decay karke, dead hoke pada hua hai. So that is what exactly humus looks like. If it's dead, if it's decayed, no oxygen activity happening, no fungi, no bacterial activity, no oxygen activity happening, no oxygen activity, then why would I call it biotic activity? It is an abiotic activity, abiotic component of the ecosystem. And the correct answer, option number C. Okay? Moving on, next question. Let's see how you guys performed. B नहीं है बेटा, प्लांट कैसे एबायोटिक हो गया? आकांक्षा मेरे बच्चे, प्लांट तो बायोटिक सबसे पहले बचे. बायोलॉजिकल एक्टिविटी, कंज्यूमिंग ऑक्सीजन और लिबरेटिंग ऑक्सीजन, एंड देयर आर प्लांट्स हु एक्चुअली कंज्यूम ऑक्सीजन. ठीक है ना? And guys, don't forget to give it a like. If you're liking the session, don't forget to hit it a like. Okay? Perhaps if you are liking the session. Okay? Moving on, let's move to next question. Which of the following is a producer in an ecosystem? Plants, animals, human beings, or fishes? We just discussed now. It's plant. Why? Because they're autotrophs? No. They're automatically producing their food, and that is why they are the first level in a trophic food chain. So if I talk about a trophic food chain, the first is going to be plants or autotrophs. Autotrophs is something which is consumed by herbivores. Herbivores are those who consume herbs or plants. Herbivores are then further consumed by carnivores or omnivores, as the case may be. Carnivores are further broken once they are dead by decomposers, and hence this is what exactly a food chain, a generic food chain, looks like. The maximum kilocal energy is found here, and as you go up, energy reduces. Here the energy is more, okay, at the plant level, and hence they are the first producers, which they are producing energy, and that is why they are the primary one, and they are producing the maximum energy possible, and that is also the reason they are primary, and they are doing so based on the sunlight which they are gaining and doing a photosynthesis process, and hence correct answer is plants. Okay, I hope you guys get the point. Moving on, next set of questions. Let's see how you guys performed in this question. I think एक easy question था. Plant, very good, Nikita. Okay, guys, don't forget to hit it a like. If you are liking the session and liking the questions, don't forget to hit it a like. I would be delighted. Okay, plants, plants, plants. Lovely, very nice. Moving on to the next set of question. Okay. Here you go. Living organisms feeding on dead organisms and excreta of living organisms are decomposer, consumer, producer, carnivore. Who are producers? Plants, primary producers. Okay. Who are consumers? Herbivores or any consumers who are consuming the previous chain. So right now we call them as herbivores, primary producers, and we have secondary producers as well. Carnivores, secondary consumers, right? Or tertiary consumers as well are omnivores and carnivores combination. Decomposers are those who consume if in case carnivores are dead. So you find decomposers, bacterial activity or fungi activity on dead organisms, and whose bodies have not been tended to, their excreta, their waste from the body in case even the organism is said to be living. In that situation as well, decomposers thrive on living organism excreta or the dead body of the organisms. Correct answer, option number A. So they are the one who feed on these two aspects, right? Correct. Moving on, can we go to next question? Done. Consumer nahi hai Nikita beta.
A it is. Yes, it's decomposer. Okay, done. Correct हो गया सबका? Okie dokie ma'am. ठीक है. Let's move to next question. Trophic level refers to what? Areas in the tropical savanna? No, obviously not. Organisms portion in food chain? Not just one food chain, because we have multiple food chains. We have a marine food chain, we have a wetland food chain, we have a generic food chain, then we have a food chain of the hydrosphere, marine का मैंने बताया आपको, then we have a land के ऊपर रहने वाले organisms का food chain and plants का. So we would not say that organisms in a food chain can be referred at a level of a trophic. It's also not the position of an organism in a biome, because then in that situation, biome is an interconnection in multiple food chains and multiple ecosystems coming together, multiple biomes coming and making up one ecosystem. Okay? But then we say the level of an organism is said to be that level which he has in an ecosystem, his importance level. We say the level of him producing or the organism producing energy is said to determine his level in the tropical context, and that can be seen at ecosystem level, not just one biome, not just one area, geographical area, but the entire ecosystem is being talked about. An ecosystem is made up of multiple biomes. So henceforth, we are not going to talk about only one biome. Multiple biomes can be talked about, because then interlinkage has to be studied as well. So organism's position in ecosystem is the trophic level, correctly defining the term called trophic level. Okay, moving on, next question. Done are we with this question? Done? Okay, Asha. Okay, सी हाँ सी बी नहीं है. राहिला मेरे बच्चे अच्छा 22nd पे पहुंच गए आप, अभी मैं 27 कराती हूँ बेटा. Guys, don't forget to hit it like a session if you're liking it. Okay, moving on, next question. Onto your screens. 22nd दिख रहा है. Here we are saying in a food chain, animals constitute what? First trophic, second trophic, intermediate trophic, या ultimate trophic. See, animals we are talking about. The first trophic level is something which is actually focusing on the autotrophs, which is the plants. Second trophic level is of herbivores. If we talk about animals, they can be herbivores, they could be carnivores, and they could be omnivores perhaps, or they are just carnivores or herbivores. So in that situation, we say intermediate trophic or intermediate connect between the food chain formulated because of animals who are consuming plants or animals who are consuming other animals. That is why two of the trophics are intertwined between each other, and hence they are intermediate trophics. So I hope you get the point. It's not second or ultimate trophic. Ultimate trophic belongs to decomposers and etc. and detrivores etc. Okay, but then first trophic is plants, but then we are not looking for a position of animals, because we find it at herbivore level, we find it at carnivore level, we find it at the secondary carnivores and the primary carnivores, tertiary as well. So we cannot actually say that only herbivores are animals. We find it at multiple levels, and that's why we call it as an intermediate trophic level between the final detrivore decomposer and the plants. Unke beech ka connect, and that's why the word intermediate. I hope you guys get the point. Let me see if you were able to answer correctly. C, very nice. We're getting a C. Perfect. Okay. Chalo. Great. Lovely. I like it. Next question. Food chain in which organisms break dead producers is called as what? Consumer, predator, parasitic, or detritus. It's actually detritus. That's why I was saying in the previous question detrivores. Detrivores are the one who are microorganisms who then feed on dead producers. And who are producers? Plants. Okay? Producers are plants, and if plants are dead, so detrivores are going to thrive on the dead plants, and that's why they are called as the detritus food chain. पैरासिटिक फूड चेन, पैरासाइट्स जो हैं वो प्लांट्स को नहीं लगते हैं, पैरासाइट्स डेड डी के ऑर्गेनिज्म को लगते हैं. प्रेडेटर फूड चेन होती है जो कि लिविंग एनिमल्स को पकड़ के प्रेडेटर्स खा जाते हैं, जैसे कि ईगल है आपका. कंज्यूमर
consumers such as herbivores or such as carnivores, they are consumers. But then अगर carnivore मर रहा है और उसके breakdown की बात हो रही है तो उसके ऊपर parasite लग सकता है, fungi बैक्टीरिया लग सकता है. बट अगर एक plant मर रहा है, क्योंकि यहाँ पे word लिखा था producer, plant मर चुका है तो उसके ऊपर जो organism thrive करते हैं वो detritivores होते हैं. Hence detritus food chain was the correct answer. ठीक है, done. Okay, let's see. Somebody is able to solve the question. 23rd done. ठीक है, okie dokie. Moving on, next question. Food chain starts. I mean, we just discussed it. Herbivores producer के बाद आ रहे हैं, carnivores herbivores के बाद आ रहे हैं, और ये sequence में दिया हुआ है. Omnivores carnivores के बाद आ रहे हैं. तो first कहाँ से है, start कहाँ से, producer से, autotroph से, प्लांट से, जो ऑटोमेटिकली अपनी एनर्जी जो है वो अपनी एनर्जी बनाते हैं सन की एनर्जी से, और सन की एनर्जी फोटोसिंथेसिस करके उन्होंने ब्रेक डाउन की और उनको हर्बिवोर्स खा गए. तो एनर्जी जो है वो फ्लो करती है फूड चेन में. एंड हेंस प्राइमरी जो आपके प्रोड्यूसर्स हैं वो फूड चेन यहीं से आपकी शुरू होती है, ऑटोट्रॉफ से शुरू होती है. ठीक है, वेरी गुड. ओके डोकी, नाइस 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 नाइस, परफेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. In a food chain, humans are secondary consumers, primary consumers, producers, primary, secondary consumers, both. The correct answer is obviously D. Primary consumer आपके herbivores आएंगे, आपके प्रोड्यूसर्स आपके प्लांट्स यानी कि ऑटोट्रॉफ्स आएंगे. सेकेंडरी कंज्यूमर्स हो सकते हैं आपके ओमनिवोर्स या फिर आपके जो ह्यूमंस हैं, क्योंकि वो अगर नॉन वेज खा रहे हैं या फिर वो आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स को खा रहे हैं, हर्बिवोर्स को खा रहे हैं, तो दोनों ही कैटेगरीज में आपके आ जाएंगे. प्राइमरी कंज्यूमर एंड सेकेंडरी कंज्यूमर बोथ में आ जाएंगे ये आपके. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी. आई थिंक ईजी सेट ऑफ क्वेश्चंस थे, और ईजी नहीं भी हो तो मैंने पूरी कोशिश की कि आपको अच्छे से ये समझा सकूं. एंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक वाज कमिंग, जो 2 दिन का हमारा सेशन हुआ है वो आया हुआ है इकोलॉजी को लेके, बायोस्फीयर को लेके और इकोसिस्टम और ट्रॉफिक लेवल्स को लेके. तो इन टॉपिक्स के मैंने क्वेश्चंस आपको करवाए हैं इन 2 सेशंस में. आई होप क्वेश्चंस आपको पसंद आए हों. अभी मुलाकात करती हूँ मैं आपसे 4:35 पे लेटेस्ट पैटर्न एमसीक्यूज पेपर 1 को लेके, जहां आज मैं आपसे लेटेस्ट पैटर्न के नए कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ. अपकमिंग JRF 2021 के लिए एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है. अगर आपसे कोई अनलॉक कोड मांगेगा वो तो ASHI10 आप डाल दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए. डिटेल कोर्सेज ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको. ये डिटेल कोर्सेज के लिए भी आपको यही सेम कोड यूज करना है, ASHI10. इससे आपको 10% से ज्यादा भी डिस्काउंट मिल जाएगा. 10% आपको मेरे कोड से मिल जाएगा, प्लस आपके कुछ क्रेडिट कॉइन्स होंगे, उससे भी आपको डिस्काउंट मिलेगा. तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए. वेट का है, जल्द से जल्द पढ़ाई आगे बढ़ाइए. और हाँ, कॉम्बैट कॉम्बैट कॉम्बैट, जल्द से कॉम्बैट में पहुंचिए. मुलाकात कीजिए कॉम्बैट के क्वेश्चंस के साथ में 17 जनवरी सुबह 11 AM लाइव अक्रॉस इंडिया के यूजीसी कैंडिडेट्स के साथ compete कीजिए और जानिए अपना स्कोर, सो दैट आपको पता चल सके कि हमें कितनी अच्छी तैयारी और करनी है. अपनी एक्चुअल इंप्रूवमेंट एरिया को हाईलाइट करने के लिए वीकेस्ट एरियाज को पहचानिए, और साथ में यूएसपी है कि यहाँ पे आपको वीडियो सोल्यूशंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे. रैंक्स है यहाँ पे, तो आपको वाउचर्स जीतने का भी पूरा मौका मिलेगा. तो जल्द से जल्दी इस फोर्टनाइट कॉम्पिटिशन में एनरोल कीजिए. लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. मुलाकात करती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट सेशन में, जहां मैं आपसे कवर करवाऊंगी मिशन JRF 2021 के लिए लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस. कॉम्बैट में जो है 17 तारीख को जुड़ना मत भूलिए. अभी रजिस्टर कर लीजिए सो दैट आपको अनअकैडमी से नोटिफिकेशन जो है टाइम टू टाइम आती रहे. थैंक यू सो वेरी मच. और ये बोनांजा सीरीज अब परसों अब कंटिन्यू रहेगी, सेम टाइम 4 PM सैटरडे को. ठीक है, तो यहाँ मुझसे मिलना ना भूलिएगा. इसमें मैनेजमेंट जो है अभी पीपल डेवलपमेंट चलेगा, पेपर 1 चलेगा, फिर नेक्स्ट वीक से आपका मैनेजमेंट शुरू हो जाएगा. तो फिलहाल पीपल डेवलपमेंट के और नए सेट ऑफ फ्रेश क्वेश्चंस के लिए सैटरडे को यहाँ मुलाकात करना मुझसे ना भूलिएगा. लेट्स वाइंड अप द सेशन फॉर नाउ. इफ यू लाइक द सेशन, डोंट फॉरगेट टू हिट इट अ लाइक. टेक केयर, गॉड ब्लेस, नमस्कार.